Interference. Last time we were talking about these are the conditions for interference. Which interference? Constructive, destructive. Same And frequency and wavelength. Steady interference. stable interference pattern. If the interference pattern is not stable, that means if any of the condition that you are mentioning, these conditions are not satisfied, then where will there be interference or not? Yes, no. So can you repeat the question? If any of the condition like monochromatic and whatever you are told like same wavelength, same frequency and this and that, if any of the condition is not satisfied, will there be interference? Sir, there will be interference, but it will be not stable. Very correct. So these are not the condition for interference. For interference, there should be at least two waves. That's it. That is the only condition. That two waves may be from the same source or different source. Doesn't matter. It doesn't matter. So if there are two or more waves which arrive at a point of medium, there will be interference. That's it. It doesn't matter whether the frequency is same, different, whatever it may be. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now open GeoGebra. Have you tried it? Different frequency, different amplitude. Okay. Now tell me what is meant by the phase. You might have tried phase. You might have used this term number of times. What is a phase? You have understood what is Sir, phase? phase means oscillation of the wave at which point the phase Okay. means it will be 2 pi, 0 to 2 pi. It will be the phase. Okay, quite correct. But this is what the property is. What exactly phase means? Sir, position of a point in circle, on a circle. Yeah, quite right. Position of particle. But position will be given by, say, the distance. Am I right? Yes, sir. Yes, no. Yes. But the phase is measured in Degree. Degree. degrees, the angle. Okay. So what does this phase means? Extreme point of a wave. Can you repeat? Extreme point of a wave. Extreme point. Okay. Okay. Sir, a complete circle that which bend, has 360 degrees is called as a Sir, phase. projection of angle on circle. Projection of angle on circle. Along the circle. Along the circle. Along the circle. Sir, it will be the period of wave. Phase means No. Appearance of Period is particle in different. circle. Development of wave. Development Between of 2 points. okay, the difference Sir, can be in appearance meters. Yeah. appearance of a point on a circle. Oh, okay, there is a point on circle. Okay, let me draw this circle and then now if you just take any point, say P on circle. Now, how do you define this phase? Phase of this point P. What is the phase?
How much is the phase? Sir, at which angle Point that on point circle P such is? as from center. Okay, let me just connect this center and this point. Okay, now you said Sir, that at phase, yeah. 30 degree So we can say approximately. so we measure phase by in anti-clockwise direction. So Mhm. according to coordinate system, if we mark it, we can get it as minus 35 or 40 degree. Okay, let me take the anti-clockwise from here. Yeah, yeah, like this. Yes, sir. Is that correct? Uh, Is no, that I don't think so. This is correct. okay? So, Anybody but else? so it is along this only somewhere. So I think you should take 0 degree angle, then mark the face, sir. This is my 0 degree. I can say this is the 0 degree. Okay. So I have to rotate my phone then. Okay. Yeah, sir. So I think this is correct now. I think this is correct. Okay. Why I'm doing all these things? Because sometimes you must have seen like this. Okay. You have already taken the horizontal axis and you have taken the angle like this. Yes, right? And Yes, then sir. you call this angle as theta, and which is the phase of that particular point. Now, why we are taking these two examples, one vertical and the other horizontal? It is because now if you take the point P, you can have the projection of point P on any of the diameter. Any of the diameter. Doesn't matter it is vertical or horizontal. But as we are quite familiar with this horizontal and vertical direction, we can have this horizontal like this, or we can have the projection on vertical axis like this. Okay. Now this one or this one, any one of these two, that is a projection. One is on say horizontal axis, say for example H dash, and the other one is on say VV dash. So which angle you should take? Say let us consider this as this is theta, so this is considered, let us consider phi. So which is the phase? Phi. Are you sure? Yes, sir. So Yes, phase sir. is measured anti-clockwise. No, that is also through But vector addition. theta is also measured anti-clockwise. Theta is also measured anti-clockwise. So Suppose 0 to this 5. Sir, we measure it anti-clockwise from origin. So no, phi is origin is at O. Okay, origin is at O. This is the origin. From origin, how you can measure the angle? You have to take some line with respect to which you can measure. For example, line say OH dash. Okay, we are measuring from here, so it becomes theta, and say OV dash, then it becomes phi. Both are different. So phase is regarded as the smallest angle of change, we can say. No. If it is smallest, then we can talk about the phase like 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 100 pi. See, whatever the motion that you are talking about is the circular motion at this moment. Okay, for this point P, it is a circular motion. And now I just denote these points like say P1 and P2. Now, if this P is moving in anti-clockwise direction, what will the motion of say P1 and P2? What kind of motion P1 and P2 has? So P1 and P2 will also moving in anti-clockwise direction. Mm-hmm. Oh, yeah, Circular this is So because these are the points on the circle, na? These are the points on the object. So as no, no, however the no, no, object. no. P1 and P2 are the projection. Projection means it is kind of shadow. Okay. Hmm. सर तो शैडो भी तो सर उसी तरीके से घूमेगा शैडो अपोजिट थोड़ा घूमेगा सर
शैडो भी घूमेगा ना, क्यों नहीं घूमेगा? फॉर हाँ वही एग्जाम्पल, कहता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा सर। let us consider another point here. Okay, let me just make it bigger and let us consider point Q. अब इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा? This will be somewhere, say along this direction it will be here, and along this direction it will be here. Now here the length from say O is decreased, and here the length is increased. Now consider the P is moving along the circle. एक राउंड उसने कंप्लीट किया. So what will be the position of say P1 and P2? How it will move? Go ahead, speak. सर Sir, अगर can you जिस repeat the डायरेक्शन में question? सब अलोंग द सर्कल मूव हो रहा है उसी में होना चाहिए सर. अगर पूरे ग्राउंड कंप्लीट हो तो वापस वहीं पे आ जाना चाहिए. Okay, Sarthak. Can you repeat the question, sir? Yes. If we are considering that the point P is rotating like this in circular path, okay, ऐसे rotate हो रहा है. So what will be the motion of this point P1 or point P2, which is the projection of point P on say HH dash or VV dash? Sir, it will rotate as P is moving. Likewise only. Rotate कैसे होगा? Circle में. Hmm. Okay, okay. वैष्णवी लोणकर. सर सर्कल में रोटेट होगा. Okay. Anybody else? सर वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड होगा क्या कि क्योंकि अगर लाइट जैसे सन के सामने अपन खड़े होते हैं तो कभी शैडो बड़ी हो जाती है फिर कभी छोटी हो जाती है वैसे. Hmm. Hmm. Quite good. Quite logical. Okay. Somebody has raised hand. Vishnu. Yeah, Vishnu. Sir, it depend on the situation. No, what kind of motion it will have? That is my question. So both it will have. Both? Both कैसे होगा? Yes, sir. Harmonic. Sahil says harmonic. Harmonic means what? सर एक्सिस के अलोंग अप डाउन करेगा वो पॉइंट प्रोजेक्शन. Exactly. Exactly. सर्कुलर कैसे जाएगा भाई? ये देख, ये पॉइंट जो है P पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन आ गया P1. Q का क्या आया? से Q1. ठीक है. फिर ऐसे करते करते, एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ. हाँ. ऐसे करते करते पॉइंट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. व्हेन P इज मूविंग फ्रॉम से P टू V. ओके, V पे कितना आएगा यहाँ पे प्रोजेक्शन? वो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज दिस इज R. R का प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? या R1 सपोज. फिर इधर आ गया तो PQRS यहाँ आएगा S1. Are you getting this point now? Yes, no? यस नो सर, एक्सप्लेन इट अगेन. आई एम नॉट Okay. गेट. नो Okay. सर. P पॉइंट का, चलो इसको Yes, क्लियर sir. Explain again, sir. पूरा क्लियर कर देता हूँ. Let me just clear it completely and then come back again. Okay. Now this is very, very important to understand. And where is the shape? Into shape. Okay. नहीं. Now this is very good circle, and now we'll take say horizontal line and vertical line.
Let us make it very perfect. ठीक है, आप भी ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं. You can draw this. The horizontal, this is green, and say vertical, let us make it red. Sir, it will also follow oscillatory motion also, no, sir? Yes, very correct. Now, what we are doing is we are taking different points. So let me take the different points. Say P, Q, R, S, T. Okay, and now we have to draw perpendicular from these points on say H dash और H1 H2. ठीक है, यहाँ से perpendicular draw करना है. Perpendicular कैसे आएगा? From point P it will be something like this. Right? From Q it will be something like this. This is what it is called as projection. Right? And R it will be something like this. Are you drawing along with me? Yes, sir. Okay, good. And then S and say T. Of course, we already have this point say V. ठीक है. अब देखो कि suppose I just write here the projection of say P as P1, Q1, and then R1, and then V1, and then S1, and then T1. Now, as the particle is moving along the circle, what is happening? Its projection is moving from say P1 to Q1 to R1, then V1, S1, T1. Okay. And what will be the projection of this point? Which is on the circle. उसका projection क्या आएगा? So which point, sir? This red. Let us PQRST U. U point है यहाँ पे. ये red वाला जो दिखा है ना? सर इसका projection UV आएगा सर. ये straight आएगा UV सर. आएगा. ठीक है? It will be same. Now, if you go on the other side, इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई doubt? Yes, sir. समझ गया. Now let us take other points like say A. यहाँ पे ले लेता हूँ A, then B, then C, and D यहाँ पे ले लेते हैं, E and F. Now draw the projection from these points. So it will be something like this. Say A1, यहाँ से आ जाएगा B1, ठीक है, यहाँ C1 आएगा, यहाँ D आएगा, D1 आएगा, then E1 आएगा, and then F1. Clear? Yes, sir. Vertical lines आपको निकालना है बस. Now, if the particle is moving, suppose this is the starting point, यहाँ से हम start करते, say for example, ये U लिया, ये V ले लेते, ठीक है? V से start किया, then it goes to P, Q, R, V, sorry V double हो गया, W ले लेते, W, P, Q, R, V. तो यहाँ पे ये मोशन कैसे होगा? कैसे होगा? W का प्रोजेक्शन W, उसके बाद P का प्रोजेक्शन P का projection P1, P1, then Q1, R1, then V1, S1, T1 and U. ठीक है? So this particle projection has changed from W to U. ठीक है? अब U से अगर ये A B C D E F G ये कर लेते तो क्या आएगा? First it will be U as it is, then A1, A1, B1, B1, C1, D1, 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 F1, E1, F1, and then
F1 W. 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 ठीक है, आ गया इतना समझ में? That means the particle's projection is moving from W to U, U to W, W to U, U to W, which is this motion. ये कौन सा मोशन है? So Oscillatory. ये हार्मोनिक मोशन होगा, Harmonic. ऑसिलेटरी. Yes, it is Harmonic. oscillatory motion. We may say harmonic or not harmonic. If the speed of the particle is same, then it is harmonic. It may not be harmonic. ठीक है? It is simply oscillatory motion, oscillation. ठीक है? Any Yes, doubt? sir. No, Now, the sir. circular motion is connected to oscillatory motion. They are both connected with each other. In this fashion, if the phase is moving or the phase is changing, not moving, phase is changing like this, then the position of the projection of the particle, or we consider another particle here, which is a projection of this first particle, then the particle is doing this harmonic motion or oscillatory motion just like the circular motion. तो circular motion अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये एक SHM कंप्लीट करेगा. ठीक है, we'll just call it as SHM, simple harmonic motion. ये आप लोगों ने पढ़ा है 12th में? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now, what is the angle we have for a particular point? Okay, let me draw very finely. For any point, now from where you have to take this angle? So it depends on you. It depends on you. Suppose this is any arbitrary point. Now you can take as horizontal axis as the projection or vertical axis as a projection. अगर आप horizontal ले रहे हैं, then this is the angle, anti-clockwise. Okay. If you are taking the vertical, अगर आप इसका projection इधर लेंगे, P का इधर लेंगे, ठीक है, जैसे इस टाइप से, Q का इधर लेंगे, R का इधर लेंगे, S का फिर इधर आ जाएगा, फिर T का इधर आएगा, ठीक है, वैसे ही A का इधर आ गया, B का इधर आ गया, C का. Again this is SHM in vertical axis, vertical direction, ठीक है. So you can take the angle as this. Clear? Yes, sir. So even if the particle is moving to and fro means this one, H1 to H2, or it is moving vertically, V1 to V2, ठीक है? So it is up and down. This is to and fro. Still it has some kind of phase related to it. ठीक है? मी काय म्हणतो सर, पर मंथ आपला 80,000 रुपये पर मंथ चालू आहे करेक्ट आपला? Please switch off your mic. हे दोन्ही बॉर्डर दोन्ही दाखव. रोशन कांबळे. एक काढी नाही काय पण घे तू सांग तिकडे काय चांगलं. उसका ध्यान ही नहीं है. Okay, now this is what I am trying to tell you, that even if it is SHM, it is circular motion, it has a phase. आप ये कहेंगे कि SHM तो straight line में है, उसका angle कैसे आएगा? So this is the way to understand what this angle is. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये कनेक्शन देखा है कि एक जगह तो सर्कुलर मोशन हो रहा है और उससे रिलेटेड मे बी दिस इज 1:1 रेशियो, समटाइम्स इट मे बी 1:2, 1:3 और 3:1, समथिंग लाइक दैट. सो यू आर मूविंग समथिंग इन सर्कुलर डायरेक्शन एंड समथिंग एल्स इज मूविंग एज SHM. क्या है कुछ ऐसा? सर A to P ऐसा एंगुलर डिस्टेंस हो रहा है कि A1 to P1 ऐसे एंगल में A1 to P1 नहीं, दिस इज लीनियर मोशन. A1 to P1, दिस इज लीनियर.
ए टू पी, ये जो हो रहा है इधर ए से ये इधर से, दिस इज एंगुलर मोशन, बट दिस इज रिलेटेड टू दैट ए से लेकर P1 तक, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन, सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, ऐसा देखा है कभी आपने? एक जगह तो आपने सर्कल यूज किया, सर्कुलर मोशन यूज किया, और दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है उससे रिलेटेड। Yes, sir. Like a ping pong ball, sir. When we throw it, and it is on circular motion, and it because of the gravity, it is because of the gravity, it is simple harmonic motion to and fro. नहीं 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 नहीं, सर हमने कहा That is a साइमल्टेनियसली हो projective. रहा हो ना, सर्कल भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, उसी का कोई दूसरा पार्ट एसएचएम कर रहा हो। हाँ, अगर मान लो कि आप पिंग पोंग खेल रहे हैं और Sir, can I उसका आप answer? शैडो देख रहे हैं, पिंग पोंग बॉल या वॉलीबॉल फॉर एग्जांपल, पिंग पोंग अगर यस सर, बहुत शैडो, popular है, यस सर। तो उसका जो शैडो होगा वो शैडो विल बी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज ऑलवेज बी ऑन द हॉरिजॉन्टल। हाँ, अगर हम आइडियल मान के चलते कि फॉर एग्जांपल दी टू प्लेयर्स आर मूविंग और पुशिंग दी वॉलीबॉल इन वेरी स्ट्रेट प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में जा रहा है वो बॉल, तो देन दी शैडो विल बी इन वन लाइन। और but this is approximate, I want the exact one. No, sir. You Sir, don't if we get no tie point. आप किसी चीज Sir, को एक मिनट मैं फिर से आपको बता देता हूँ और फिर देन विल टेक दी आंसर्स। आप किसी चीज को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं, उससे रिलेटेड दूसरी चीज ऐसे जंप कर रही है ऐसा कोई एग्जांपल आपने देखा है क्या? सर जोकर, जोकर कैसे? वो साइकिल पे ऐसे गोल गोल घूमता साइकिल और अपने हाथ में बॉल सर वो ऐसे उछालते रहता, ऐसे देखो। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। sir, if we tie a rock to a string and move it in a circular motion axis, its shadow will be on the ground. It will be oscillatory motion and it will be a circular motion. If you are moving it vertical plane, in vertical plane. Yes, in vertical plane. और So like Sir, ball in the ground. बॉल का तो हो गया, वॉलीबॉल तो हमने ले लिया। और you are mechanical engineer, you are civil engineer, so you have to think about the machines. ये Sir, machine like the Rotation of pendulum. wheels. किसी और ने कुछ बताया? सार्थक प्रोबेबली। Rotation of wheel. रोटेशन ऑफ व्हील, इससे रिलेटेड एसएचएम कौन सा है? Sir, झूला, झूला sir. झूला इज सिंपली एसएचएम बट इट इज नॉट हैविंग सर्कुलर मोशन। वो घोड़े का होता है वो ऐसे जत्रा में। हाँ, तो उसमें एसएचएम कहाँ आ गया? सर व्हाट अबाउट जायरोस्कोप? दैट इज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल चीजें थोड़ा सा इधर उधर देखो। आप में से कितने के घर में कार है? रेज योर हैंड। सर मेरे इस कार में कहीं तो भी आप सर्कुलर मोशन करते हैं और कुछ किसी चीज का वर्टिकल मोशन होता है या सर वाइपर वाइपर, यस, वन एग्जांपल, बट वाइपर यू डोंट सी क्लियरली। हाँ, Steering. नहीं, स्टीयरिंग में गियर, स्टीयरिंग का वर्टिकल का होता है सर गियर भी नहीं। व्हील, टायर सर, कार शॉक एब्जॉर्बर नहीं। Okay, let me tell you one example and then I will ask another example. Okay, in car, if you want to move the window up or down, but you don't have that button, okay? ओके सर, वो तो घोड़े रोटेटर से वाला जो होता है सर, रोटेट करते हैं। होता है, हाँ, हाथ Yes. से ऊपर खींच लेते हैं, नहीं सर, रोटेट करते हैं उसको। रोटेट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज क्रैंक मैकेनिज्म। याद रखना, मैकेनिकल
में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैंक मैकेनिज्म. यू आर रोटेटिंग समथिंग, यू आर मेकिंग अ सर्कुलर मोशन of that handle, and then the window of the car is moving up or down. ठीक है? Sir, I Yes, sir. got second example, sir. Yes, go ahead. The length machine, sir. We will rotate it circular motion, and the tail. What is the part? Simple harmonic motion is called tail, sir. Which machine you said? Length machine, sir. Center lathe machine. Central lathe machine, yes, sir. Okay. ये तो वर्कशॉप का एग्जांपल हो गया ना. Yes, sir. इसी टाइप की सर- घर में कोई मशीन होती है क्या? सर स्प्रिंग. सर नहीं, स्प्रिंग में सर्कुलर मोशन नहीं होता. सर वैसे तो दुकान का शटर होगा, शटर. वेरी गुड प्रज्वल, वेरी गुड. दुकान का वो शटर जो आजकल नए इसमें ये करते हैं ना, हाँ वो रोटेट ऐसा करते rotate हैं. करते लेकिन रोटेट ऊपर करते हैं एक तरफ से, वो ऊपर नीचे होता है. हाँ सर. और सर वो कंक्रीट मशीन वो राउंड फिरता है, राउंड घूमता है. नहीं नहीं, दैट इज Sir, मच door? Lock. Huh? टेलर मशीन. Lock. Yes, somebody said Taylor machine. यस सर. Taylor machine is spring- the best example, right? सर स्प्रिंकर हो गया. और हाँ, स्प्रिंकर पानी के. पानी के स्प्रिंकलर नहीं 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 Sir, doors? नहीं. सर बैनर मशीन. Banner machine can be an example. Okay, सर but स्केट्स. we'll take the Taylor machine. ठीक है, स्विंग मशीन जो होती है ना. सर मिक्सर. मिक्सर में नहीं होता, मिक्सर में सिर्फ सर्कुलर Sir, मोशन. lift. Lock, sir. Lock. नहीं, सर्कुलर और हाँ, Pendulum? लॉक में भी होता है. Lock में Yes, होता है, लॉक sir. में भी होता है. Will be सर एक तरफ स्केट्स, रोलर स्केट्स. टू सम एक्सटेंट बट नॉट एग्जैक्टली. एसएचएम नहीं होगा उसमें. लॉक में कैसे एसएचएम होता है? चेन और ऊपर नीचे. सर जो साइकिल की चेन और जो उसके पीछे का वो होता है, रोटेटिंग वाला. Pulley. Yes, yes. Cycle and the gear, the back gear. Pulley is also a good example. सर ड्रिलिंग मशीन. कौन सी? ड्रिलिंग? Yes, drilling machine also. सर पानी का स्प्रिंकर आएगा ना. आ गया ध्यान में अब? yes, Yes, sir. So the phase is not only in physics. It is everywhere. Now I want you to connect this circular motion with, or the oscillation with, the wave motion. So for that we'll go to GeoGebra and we'll draw one. Why it is not working? Okay, let me take the. Okay, now it is working. Let me share the GeoGebra here. I hope you are connected with this circular and SHM. Okay. Now you can go to GeoGebra. You can try it also at your home. And let me just write here sine of x, which is very popular function. Okay. Now there is something called setting here, and I don't know इसको हम change कैसे करेंगे. ठीक है, तो horizontal axis should be the angle. Okay, x axis instead of distance. It should show the yes in radians. नहीं. यस, डिग्री हो गया, डिग्री नहीं चाहिए, पाई चाहिए. ठीक है, आ गया. अरे एबल टू सी दिस? Yes, sir. यस सर. ये पाई में क्रॉस हो रहा है, ये 2 पाई पे क्रॉस हो रहा है. ठीक है. Now if I draw some line from here
टू हियर. ओके, यहाँ से यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा? टेक ओनली Pi by दिस 2, दिस pi by पॉइंट. 2. It Pi will by be 2. pi by 2. But we are talking about pi and pi by 2 and all these things. These are the angles, right? Yes. So this is what the phase is. This is what the phase is for the particular wave. So if we talk about say any point, and then I'll just draw a line, line segment. If I take this line segment from here to here, okay. Now at this point, what are the angle we have? Now this is what the SHM is, kind of SHM, not SHM but kind of SHM. Okay, SHM कहाँ आएगा ये इसमें? This point is oscillating up and down, up and down. Okay, इसको अगर मैं extend कर देता हूँ इधर, ठीक है? So the point is going from say B to A and A to B and B to C and C to B. Are you getting this point? Yes. Vertical Yes, oscillate हो रहा है. Because of that we are getting the wave. Because of that we are getting the wave. जैसे दूसरा अगर हम लेते हैं तो यहाँ से ऐसे ऑसिलेट होगा, थोड़ा कम रहेगा ये, ठीक है? And then this will be again much smaller, again much smaller. Okay, that is what we are just thinking of. So SHM is connected with the wave motion. ठीक है, वर्टिकल SHM है ये आपने एग्जांपल की देखा है कि पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन एंड दे आर क्रिएटिंग द वेव. देखा है नहीं देखा है? सर पानी में पत्थर मार. ओके, सो वाटर वेव्स बेसिकली. तो वो तो रिपल इफेक्ट हुआ ना सर, पानी में पत्थर मारते हैं तो. कौन सा इफेक्ट? रिपल हुआ ना सर, वो तो रिपल हुआ. रिपल हुआ. So it is also kind of because the particles of the water are moving up and down. So that is creating the wave. But So we can also think that tea bag too, sir. हम हाँ टी बैग भी सर हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम उसको गर्म पानी में डिप करते हैं तो सर वेव क्रिएट होती है. that is also kind of, but this is not very clear कि particles. Pardon? स्लिंकी स्लिंकी वो भी ऊपर नीचे होता है सर. लेकिन वो भी मतलब I just want similar kind of effect in actual particles. So let me ask you a question. क्रिकेट कितने लोग नहीं देखते हैं? Oh my God, not watching cricket at this age is a sin. So actually I don't watch cricket, but this is what the example I want to quote from cricket or maybe football. You should watch cricket to understand physics. ठीक है, तो kitchen और cricket, these two are very common. Okay, in cricket have you seen this kind of wave? Yes, sir. Yes, sir. Where? When batsman bats touch or not touch, maybe वो बॉल जब टच होता है और नहीं होता वो अंपायर जब चेक करता है. No, that is a sound wave that you are talking about. हाँ, yes, sound wave. Yeah. No. This is a regular wave pattern. जब बॉल बाउंड्री का तरफ जाता है, फिर टप्पे खाते हुए बॉल जाती है तभी. टप्पा खाते हुए. That is one example. Yes. Or अल्ट्रा एज इज काइंड ऑफ वो पहले जो जिसने बताया ना सर, जब बॉलर बॉल डिलीवरी करता है सर, बॉल फेंकता है सर तब. नहीं, बट इट इज नॉट अ रेगुलर वेव. रेगुलर सर, जब मतलब ऑडियंस में सब वेव बनाते हैं चीयर करते हैं. यस नीतल, यू आर वेरी करेक्ट. ऑडियंस में लोग खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं. यस सर. उसको क्या बोलते हैं, कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट. इट इज ट्रांसवर्स वेव, ऑब्वियसली इट इज ट्रांसवर्स वेव, बट उसको नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है. SHM? लिख लो. हाँ, चीयर वेव.
नहीं 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 नहीं, it started SHM from and slow football. motion. No, that is a SHM. ये SHM common लोगों को नहीं पता है. Write down this question. What this wave is called, which is generated by the people by standing and sitting in cricket ground or football ground. Okay, इसको search करना. Longitudinal wave. No, it is not longitudinal. We'll see the longitudinal wave later on. Or maybe I can give the example. अगर मान लो कि आपका एक फेवरेट हीरो या हीरोइन, जो भी हीरोइन मतलब एक्ट्रेस, ठीक है, वर्धा में आ रही है, ठीक है, उसके लिए टिकट बुकिंग चालू है उसके प्रोग्राम के लिए, और आपको कहीं से पता चला कि यू आर लाइक 1000 पीपल एंड देर आर ओनली 500 टिकट्स रिमेनिंग, ठीक है, एक लाइन में आपको खड़ा कर दिया. अब आप क्या करोगे? तो ब्लैक में करिए. लोग देखेंगे सर कितने, उस हिसाब से. तो ब्लैक बहुत में सिंपल हो करिए. गया. हमको टिकट नहीं मिलने वाला है तो धक्का हम दे घर चल देंगे. जाएंगे. एग्जैक्टली, देयर विल बी अ पुश. अब अगर पीछे वाले ने धक्का दे दिया तो सामने वाला क्या करेगा? और धक्का देगा. सामने वाले आगे को और धक्का सामने लगेगा. पीछे आ एनर्जी जाएगा ट्रांसफर. वो पीछे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, राइट? Yes, Now sir. there will be somewhere a compression and there will be somewhere a rarefaction. वो होता है longitudinal wave. क्या पार्टिकल कुछ जगह बहुत नजदीक आते हैं तो कुछ जगह बहुत दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है. nowadays it is not possible because of corona. No queue, ठीक है. But this is the transverse wave and you have to find out what this wave is called and you have to find out the, आप GeoGebra में देखो, I am giving this as an assignment, how to find out the exact, ये जो है ना यहाँ पे, ये exact यहाँ पे कितना मेजरमेंट है, एंगल कितना है, तो you can just try it, ठीक है. ये point B, suppose point, another point, let me take the point here. How will you find out? ये स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है. सो पॉइंट बी, जे, के, एल, यहाँ पे फेज कितना है, एंड देन इफ देर इज अनदर वेव विच इज इन फेज मतलब इसका अगर फेज सपोज पाए है तो दूसरे वेव का भी पाए ही रहेगा. दैट इज व्हाट दी, लेट मी ड्रॉ अनदर वेव. So say 5 plus sin x. फाइव कुछ ज्यादा ही हो गया. सर 3 करती है. 3 या 2 तक भी सफिशिएंट है. सर 2 पे वो इंटरसेक्ट करने लगेगा सर, इसलिए. नहीं आएगा, नहीं. because they are in phase, so even Okay. you can have one. ये देखो. Now just see, if you talk about this wave, इसका ये जो क्या कहते हैं इसे, Zero. mean position, Origin. it is at 1. Okay, this is origin. Okay, Yes. 1 पे origin है ये. Now you see the phase of this wave here and the phase of green wave here, both are same, pi. Okay, ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया, ये मैक्सिमम आ गया, ये भी मैक्सिमम आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये नेगेटिव मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ये भी नेगेटिव मैक्सिमम हो गया. दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द phase are in, sorry, these two waves are in phase because they have the same phase difference everywhere. Suppose you take like this point and this point, तो यहाँ पे phase difference कितना होगा? उतना ही होगा जितना यहाँ पे है किसी भी point पे. दो पैरेलल पॉइंट पे जो डिफरेंस होगा वही Yes, सेम होगा. yes. These kind of waves are called as in phase wave. And when we consider this, then they get add up. तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है उसको ऐड करके इतना ये जो होगा, सपोज दिस इज 1 यूनिट Total हो एंड दिस जाएगा इज सर. 1 यूनिट, 2 सो हो इट जाएगा. बिकम्स 2 यूनिट्स. ठीक है, सपोज समवेयर हियर वी हैव कितना यूनिट्स आएगा वो प्लस दिस, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. ठीक है,
आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So these are the few things that I just wanted to tell you. And now we will take another example of out of phase wave. Out of phase मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव x में जा रहा है तो दूसरे का नेगेटिव x जाएगा, सॉरी नेगेटिव y जाएगा. Are you getting my Sir, the point? cos wave. It is a cos wave simply. So what I can just write here, input say cos x. ठीक है, लव ने बता दिया cos wave है, cos कर देते. गलत हो गया तो उसकी वजह से, अरे नहीं, this is not a cos wave. See, this is 0, this is maximum. It is not a cos wave. कौन सी वेव होगी कि जो ऐसे जाएगी नीचे से? Write it down, find it out, and then what you have to do So is minus 1 plus just sin x. minus sin x. Yes, I think minus sin x. चलो टाइप करके देख लेते हैं. देखो दिस इज द, ये इसका Sir, फायदा है. sin, I think sin inverse x होगा sir. साइन इनवर्स एक्स तो एंगल हो जाएगा. माइनस तो साइन sin एक्स। inverse x का भी तो सर ग्राफ होता है. चलो हाँ, माइनस साइन minus एक्स sin कर x. दे. आ गया. तो कलर थोड़ा सा हाँ चेंज सर. कर देते. सेटिंग कलर ग्रीन ही है ना ऑलरेडी, तो कुछ अलग कर दो. ओके, आर यू एबल टू सी दिस? Yes sir. Yes, तो sir. एक fx लेते हैं और बाकी सब इसको हटा देते हैं. Sir, you can delete cos wave sir. Yes, cos also. Now you can see that if the wave has, one wave has maxima, the other one has, Minima. no, it is not नहीं, negative maxima. नेगेटिव Opposite. मैक्सिमा. इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको बार बार. Yes sir. So if one wave has the positive maxima, the other one wave has negative maxima. Now this the angle that you can say that this has the angle, suppose pi by 2, then this is minus pi by 2. Okay, so it is 180 degree difference. कैसे वो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ फेज है मतलब 180 डिग्री है, मतलब पाई रेडियन है. कैसे? Sir, same क्वेश्चन phase में होते तो sir. ये तो मुझे सेम ही दिख रहा है ना, ये एक ही लाइन पे दिख रहे हैं सब. सर आप उसको join करेंगे sir तो वो जो point. तो join करने में 180 डिग्री एंगल आना चाहिए सर दोनों पॉइंट के बीच का एंगल. ओके, सर A और B को join करेंगे तो. नहीं उसके एंगल तो यहाँ पे भी 180 डिग्री आएगा. वैसे अगर ज्वाइन अच्छा यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया तो 180 डिग्री आएगा. ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया तो नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉपर आंसर. Yeah, we have vector from say C to A, ठीक, and we have vector from C to B. Now these are the opposite vectors. ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, but it's okay. How the phase between these two, phase difference between these two is 180 degree. लिख लो, क्वेश्चन लिख लो. इसको फाइंड आउट करना है आपको. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर एक बार. If the one wave is say sin x, the other one wave is sin minus x. Okay, and we take the maximum of one wave and the negative maximum of the other wave. So the phase difference between these two waves is 180 degree. How? Now interesting thing is that it is not only at this point, then 180 degree is here also and here also. It is out of phase. सर वो सेम टाइम पे मूव करते इसलिए नहीं, एंगल देखो, एंगल
एंगल दे. हाँ थंडीचे डोके लय दुखते. Here also it is 180 degree, here also 180 degree, here also 180 degree. You have to prove how it is 180 degree. ठीक है? And I am giving you the questions which you have already studied in 12th. I am not teaching you anything new. It is already studied in 12th. They are symmetric functions. Okay, then so what? करो इसको, ठीक है? तो ट्राई करो. I don't want any answer quickly. Sir, their phase difference will same, so Same मतलब कितना? कैसे? कैसे? Find out the phase. Phase difference कैसे निकालोगे? किसी भी चीज का डिफरेंस निकालने के लिए आपको Sir, कितनी ये वैल्यूज चाहिए? सर ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स मतलब अपोजिट वेव्स है सर. सर तो इनमें नेगेटिव होगा सर. एक π/2 माइनस π/2 तो सर ये 180 डिग्री हो जाना चाहिए. वेरी करेक्ट. दूसरा F और G पॉइंट. अभी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. जियोजेब्रा में आपको फाइंड आउट करना है. π/4. नहीं, π/4 कैसे आएगा? सर π/4 नहीं आएगा वो तो सर. तो वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है? क्लियर? ओके सर. यस सर. Now how to find out the phase or how to find out the x coordinate of this F and G? That is your task. सर्च करो, गूगल में मिल जाएगा आपको. ट्राई करो. Sir, it is out of phase. That's why it is 180 degree. तो हर जगह कैसे आउट ऑफ फेज होगा, ये मुझे प्रूव करके दिखा. जैसे F और G पॉइंट है ना, ये तो समझ में आ गया. जैसे A और B की पॉइंट जो है, तो A इज से प्लस π/2, B इज माइनस π/2, सो π/2 माइनस π/2. डिफरेंस आ गया पाई. 2π/2 is pi. So 180 degree. Okay. How about F and G? How about H and I? ये फाइंड आउट करो आप. कैसे आएगा ये? सेम होगी सर वैल्यू. सेम वैल्यू होगी तो कैसे होगा? नहीं सर सेम वैल्यू नहीं होगी सर. सेम वैल्यू होगी तो कैसे स्ट्रेट होगा? लाइन हो जाएगा सर फिर तो. इट इज नॉट. इट विल बी जीरो देन. ठीक है? यस सर. ट्राई करो. Okay, let me take the attendance. 1, 2, 3. Roll number 4. 5, 6, 7, सर 8, yesterday 9. I was absent सर. सर तो कल आपने कुछ पढ़ाया था क्या सर? मतलब नहीं इसी नहीं, से कल रिलेटेड. का सेशन हमारा इसका था, IIC का था. तो सर कुछ उसमें इम्पोर्टेंट हुआ था क्या सर?